Good morning, students. Standard 10, second chapter name is Historiography, Indian Tradition. Dear students, we have studied in last video various ideological frameworks. उसमें क्या देखा था? कॉलोनियल हिस्टोग्राफी, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी, नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी. और कॉलोनियल हिस्टोग्राफी में क्या देखा था? द अर्लिएस्ट स्कॉलर्स हु स्टडी, सी, the earliest scholars who study and wrote Indian history were mainly British officers and Christian missionaries. Their prejudice is clearly reflected in the way some of them have ridiculed Indian culture. Their writing were used to justify the colonial British rule only. There are 5 volumes of Cambridge History of India. Book name was what? Cambridge History of India, published during 1922 to 1937. See a distinct example colonial historiography. Then which point see in last video? Orientalist historiography. Many Europeans felt curious about civilization and country of the East. East means India. India के बारे में क्या था? Many Europeans felt curious about civilization and countries of the East. Some scholars felt admiration, felt respect for them. These scholars were known as Orientalist historiography. Then Orientalist historiography में क्या देखा था? और एक point, in 1784 Sir William Jones founded Asiatic Society in Kolkata. Among the Orientalist scholars, Friedrich Max Muller deserves a special mention. He was deeply interested in which literature? Sanskrit literature. First translate the Sanskrit text of Hitopdesh. Next point, what? Nationalist historiography. Dear students, this point we have studied in last video. Now we are going to study this point. Historiography in the post-independence era. स्वतंत्रता के दौरान या स्वतंत्रता के बाद ओनली राजघराना पर हिस्ट्री सीमित नहीं रही, उसके अलावा और भी उसमें विषय आ गए. सी, the scholars of the post-independence era felt the need to write the history various communities. देन साइंस के बारे में हिस्ट्री लिखी जा रही, इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में, एक्सेट्रा. सी, द स्कॉलर्स ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा फेल्ट द नीड टू राइट हिस्ट्री वेरियस कम्युनिटीज के बारे में, साइंस के बारे में, इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में, ये सारे विषय पर हिस्ट्री लिखी जा रही. देन मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी. डियर स्टूडेंट, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री है वो किसके विचारधारा पर आधारित है? कार्ल मार्क्स पर के विचारधारा पर आधारित है. सी, कार्ल मार्क्स मार्क्सिस्ट हिस्ट्री. सी पॉइंट, the writings of Marxist historians focus on the means of production. See, historians focus on the means of production, modes of production and the industrial relations. See, पहले हमने देखा है जमींदारों के ही पास जमीन या इंडस्ट्री हुआ करती थी, तो वो इंडस्ट्री में इंडस्ट्री के ओनर और उसमें काम करने वाले वर्कर्स, उनके रिलेशन के बारे में भी फोकस डाला मार्क्सिस्ट हिस्ट्री ने. द राइटिंग्स ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस फोकस ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशन. ओनर के बीच और वर्कर के बीच में रिलेशन क्या है, इसके बारे में भी इसमें लिखा है. मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, द राइटिंग्स ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस focus on the means of production and modes of production and the industrial relation. Second point, their prime focus was to analyze and study the impact of every social events of the people. See, और एक फोकस डाला छोटे छोटे जो एवरी सोशल इवेंट्स ऑन पीपल है उसके बारे में भी क्या डाला है? फोकस डाला है मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में. देन नेक्स्ट पॉइंट, they study the transition within the caste system. See, they study the transition within the caste system. जाति व्यवस्था के बारे में, जाति व्यवस्था में क्या क्या चेंजेस है उसके बारे में भी हिस्ट्री है. मार्क्सिस्ट हिस्ट्री ने हिस्ट्री लिखी है. ओके, नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री. सी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट मार्क्सिस्ट हिस्ट्री. नेक्स्ट पॉइंट,
Comrade Sripad Amrut Dange, the founder of Indian Communist Party, wrote a book, Primitive Communism to Slavery, which became a prominent example of Marxist historiography. कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे को दी हुई पदवी है, उसे कॉमरेड कहते हैं. कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे, द फाउंडर ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट कार्यकर्ता जो होते हैं उसको कॉमरेड कहा जाता है, उसको पदवी दी जाती है. कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे, द फाउंडर ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, रोट अ बुक नेम प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, which became a prominent example of Marxist historiography. See, Indian Marxist historians name here, Damodar Dharmananda Kosambi. See, this point is most important, dear students. India's Marxist historians name Damodar Dharmananda Kosambi, Comrade Sripad Amrut Dange, Comrade Sharad Patil, then Ram Sharan Sharma. Now see next point. Now see, starting with subaltern history. समाज के नीचे तबके बारे में होता है, subaltern history उसे कहते हैं. See, the seeds of subaltern history are found in Marxist historiography. The seeds, उसका origin Marxist historiography में बताया है. The seeds of subaltern history are found in Marxist historiography. Subaltern history is the history of people who are considered as the bottommost ranks of the society. जो समाज में सबसे नीचे तक के लोग होते हैं उससे हिस्ट्री शुरू होनी चाहिए, ऐसा मत एंटोनियो ग्रामस्की का था. See, the seeds of subaltern history are found in Marxist historiography. इसका origin Marxist historiography में है subaltern history का. The seeds of subaltern history are found in Marxist historiography. Subaltern history is the history of the people who are considered as the bottommost ranks of the society. उससे शुरू होनी चाहिए, जो समाज में नीचे तक के लोग होते हैं उससे शुरू होनी चाहिए. Then Ranjit Guha, see, Ranjit Guha played an important role in establishing subaltern history. Most important point. See, Ranjit Guha played an important role in establishing subaltern history as an important academic school of historiography. See, next point, the process of writing history. See, the process of writing history should start from the bottommost rank. Should start bottommost rank. Italian historians Antonio Gramsci played an important role in developing this idea, subaltern history. Understood? Now see next point. Now see subaltern history के next point. See, Mahatma Phule. See, Mahatma Phule drew attention to the exploitation of women. See, exploitation of women, Shudras and Atishudras. See, Shudras and Atishudra under the pretext of religion in his book Gulamgiri. See, Mahatma Phule drew attention most of all exploitation of women. Women पर जो अत्याचार होता है ओ शुद्रा अतिशुद्रा ओ अंडर द प्रेटेस्ट ऑफ रिलीजन इन हिज बुक. गुलामगिरी जो बुक है उसमें एक्सप्लोटेशन ऑफ वुमन, अत्याचार वुमन पे जो होता है उसके बारे में, शुद्रा अतिशुद्रा के बारे में है, रिलीजन इन हिज book Gulamgiri. Mahatma Phule drew attention to the exploitation of women, Shudras, Atishudras under the pretext of religion in his book name was what? Gulamgiri. Next point is Dr. Babasaheb Ambedkar. See, Dr. Babasaheb Ambedkar in his two books name was Who Were the Shudras? See, Who Were the Shudras and the Untouchable. Two books name was what? Who were the Shudras and the Untouchable. The Untouchable. Wrote about the injustice done to the Dalits. See, wrote about the injustice done to the Dalit and their significant role in shaping the culture and political aspect of India. See, who were the Shudras and the Untouchable, जो एक
दो बुक है उसमें मोस्ट ऑफ ऑल क्या है, wrote about the injustice done to the Dalit and their significant role in shaping the cultural and political aspect of India. Dear student, understood this point?